Yes, Assalamu alaikum. I'm Professor Ishtiaq Ahmad. Today we will discuss about social interaction and social process. This is a topic of sociology in which we discuss how people interact and what are the processes of interaction. First of all, we will define social interaction. Social interaction is the foundation of society. Without interaction, there would be no group life. For instance, interaction is the major process for socialization of individual from birth to death, which exists in every culture. सोशल इंटरेक्शन बेसिकली बाहमी ताल्लुक को कहते हैं। इस बाहमी ताल्लुक के बगैर कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता और ना ही इंसान की सोशलाइजेशन हो सकती है मुआशरे के अंदर, क्योंकि जब आप बाहमी ताल्लुक बनाएंगे, कायम करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके सामने कोई ग्रुप होना चाहिए या कोई इंडिविजुअल होना चाहिए या सोसाइटी के लोगों के साथ ही ताल्लुक बनाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए कि सोशल इंटरेक्शन के बगैर आपकी लाइफ जो है वो जो अधूरी होगी, मुकम्मल नहीं हो सकती। ये डेफिनेशन एक सोशियोलॉजिस्ट मेरल की है। सोशल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्टेक्ट where the behavior modifies slightly, जहां आपका बिहेवियर चेंज होता है, स्लाइटली मॉडिफाई होता है, सोशल इंटरेक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन डॉसन एंड गेटी की है। सोशल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस वेयर बाय men interpenetrate the mind of each other. सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए इंसान एक दूसरे के माइंड में उसके ख्यालात इंटरपेनिट्रेट करते हैं, एक दूसरे के जहन तक आप पहुंचते हैं, एक दूसरे के जहन को मुतासर करते हैं। उसको डॉसन एंड गेटी कहते हैं कि दिस इज सोशल इंटरेक्शन। ये फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन है। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। एक इंडिविजुअल की क्या क्या किस तरह बाहमी ताल्लुक कायम होता है दूसरों के साथ। तो सबसे पहले बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, between individual and group, between groups and groups, between individual and culture, between individual and individual. This is form of social interaction in which one individual interact with another individual. For example, doctor and patient, customer and shopkeeper. This is example of interaction between individual and individual. Situations for social interaction, person to person. This is same as defined in previous slide. Individual and individual, this is person to person. Between individual and group, this is second form of social interaction in which an individual interact with the large audience or a group. For example, a singer and the audience. This is example of individual and group. For example, another example of teacher and students, where a teacher is an individual and students is a group, so that between the interaction between the teacher and student is between individual and group. Person to group, this is exactly what individual and group. So person to group, a teacher is teaching his class, this is person to group. Between group and group, this is third form of social interaction where a group interacts with another group. For example, a debate competition where two groups are interacting with each other. कोई मैच हो सकता है, क्रिकेट मैच है जहाँ दो टीम्स है, दो ग्रुप्स है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। इसके बाद जो है वो आपका कोई जंग हो सकती है जहाँ दो फौजें लड़ती है, आपस में इंटरेक्ट करती है। तो ये ग्रुप टू ग्रुप है। कोई मुशायरा हो सकता है जिसमें चंद लोग एक तरफ बैठे हैं और दूसरे लोग एक तरफ बैठे हैं, तो पोएट्री का कंपटीशन है। दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप। Fourth form of social interaction is individual and culture, where an individual interacts with his culture.
where an individual learns norms, values, customs and traditions of a culture. देखिए कल्चर के साथ इंटरेक्ट करना है तो मुझे उसके नॉर्म्स, कस्टम, वैल्यूज, ट्रेडिशंस का पता होना चाहिए और मैंने उसके अंदर रहते हुए ही इंटरेक्ट करना है उसके साथ। कल्चर के साथ मेरा बाकी ताल्लुक है। अगर मैं एक कल्चर को नहीं समझूंगा तो मेरी लाइफ इनकम्प्लीट होगी। ये इंडिविजुअल एंड कल्चर का रिलेशनशिप भी चेंज होता रहता है। ये फॉर्म्स ऑफ जो इंटरेक्शन है ये चेंज होती रहती है। अब जैसा कि मैं पाकिस्तानी कल्चर की एग्जांपल देता हूँ तो पाकिस्तान की कल्चर की नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस डिफरेंट है। अब मैं इस कल्चर में रहता हूँ तो मेरा बाकी ताल्लुक इस कल्चर के साथ जो होगा वो डिफरेंट होगा। और अगर मैं मूव करता हूँ किसी दूसरे कंट्री में, अमेरिका में जाता हूँ तो वहाँ का कल्चर, उसकी नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम अलग है। तो उस कल्चर के साथ मुझे इंटरेक्ट डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। तो ये एक रिलेशनशिप है इंडिविजुअल का कल्चर के साथ जिसके तहत वो सोसाइटी के अंदर अपनी जो है वो लाइफ को कंटिन्यू करता है। अगर वो सोशल इंटरेक्ट करता है, अगर वो कल्चर को समझता है, कल्चर की अंडरस्टैंडिंग है उसे, तो वो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? थ्रू इंटरेक्शन। अपने कल्चर को वो कैसे समझेगा? थ्रू इंटरेक्शन, थ्रू सोसाइटी, थ्रू इंटरेक्शन विद ग्रुप्स, थ्रू इंटरेक्शन विद फैमिली, टीचर्स, रिलीजन। ये इंटरेक्शन है जो मुझे अपने कल्चर के बारे में सारा कुछ बताता है। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन या सोशल प्रोसेस भी इसे कहते हैं। सोशल प्रोसेस कौन कौन से हैं? देयर आर टू मेजर सोशल प्रोसेस, अपोजिशन एंड कोऑपरेशन। And further, opposition is divided into two parts: competition and conflict. And cooperation is also divided into two categories: accommodation and assimilation या acculturation. So first we will discuss about opposition. Opposition, this is disassociate form of social interaction. It includes competition and conflict. In every institution, there is competition, and competition may be called as struggle between two or more individuals who are striving to get something which is relatively limited. अपोजिशन क्या है? बेसिकली अपोजिशन एक डिसएसोसिएट फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन है कि हमारा जो एक स्ट्रगल करते हैं हम अपने मुखालफ के अगेंस्ट के लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यूस स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमने आगे निकलना है। किससे आगे निकलना है? अपने अपोजिट से, जो मेरे मुखालफ है, जो मेरे आप सामने है, जो मेरे मद्दे मुकाबल है, मैंने उनसे आगे निकलना है। तो दिस इज कॉल्ड अपोजिशन। इसकी दो टाइप्स है, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन, ये कंपटीशन कैसा हो सकता है? पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंपटीशन, इंट्रा एंड इंटर ग्रुप कंपटीशन। पर्सनल एंड इम्पर्सनल कंपटीशन. Personal competition takes place in society when the individuals or groups competing with one another and the competition is face to face. देखिए कंपटीशन हम पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन की आगे तीन बेसिकली फॉर्म्स हैं। सबसे पहले है पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल कंपटीशन वो होता है जिसमें आपका मुकाबल आपको पता है कि ये आदमी है, फेस टू फेस है। जैसे इलेक्शन में आप समझे कि दो उम्मीदवार हैं, टू कैंडिडेट्स, उनको पता होता है कि मेरा मुखालिफ कौन है, किस तरह से कैंपेन कर रहा है, वो कैसे फील्ड में काम कर रहा है और मैं कैसे कर रहा हूँ, और मुझे जीतने के लिए कितने वोट जो है हमारे हल्के के हैं जो चाहिए उससे ज्यादा लेने होंगे, और उसकी पार्टी कौन है, उसकी एफिलिएशन किसके साथ है, ये कैंडिडेट्स को पता होता है। तो ये फेस टू फेस है। आप समझ लेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इनका कंपटीशन पर्सनल होगा कि सामने का मद्दे मुकाबल हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। एक इम्पर्सनल कंपटीशन है जिसमें आपको अपने जो competing पार्टी है उसका पता नहीं होता। The competition in which there may be not face-to-face interaction. The competition for the post of Federal Public Service Commission. अगर देखें कोई आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई टेस्ट देने जाते हैं किसी जॉब के लिए, तो आपको पता तो है कंपटीशन है, लेकिन आप फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है आपके कैंडिडेट्स के साथ। आपको पता नहीं है कितने कैंडिडेट्स हैं और कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं होता। लेकिन जो अदारा है उसको पता होता है, उसके पास वो रिकॉर्ड होता है, लेकिन इंडिविजुअल्स को नहीं पता होता। तो दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड इम्पर्सनल कंपटीशन।
Next type of competition, personal competition, involves direct face-to-face interaction between opposing. Personal competition, impersonal competition. Second form of competition is formal and informal competition. Formal competition is that has structured rules and regulations. It has written rules to be followed, otherwise the violator will be punished. In modern society, like in cricket match, football match, there are structured rules and regulations. This is called formal competition. Informal is the competition in which there is no written rule and regulation, but some unwritten set of rules are to be followed. In primitive or folk societies, in informal competition, there is no structured rules and regulations, but some rules, unwritten rules, are to be followed. uh, just like in primitive cultures, folk society, जैसे हम पुरानी छोटे बचपन में गेम खेलते हैं, गली मोहल्ले की गेम्स हैं, तो वहां पे कोई रिटर्न रूल्स नहीं होते, तो इसको हम इनफॉर्मल कंपटीशन कहते हैं. Intra and inter-group competition. The competition that occurs within the community is called intra-group competition. This is within the same community or village. एक ही ग्रुप के अंदर जो कंपटीशन है उसे हम इंट्रा ग्रुप कहते हैं. जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर कोई कंपटीशन है तो उसे हम कहेंगे इंट्रा ग्रुप कंपटीशन. एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके आपस में मैचेस हैं, हम टू टीम बना देते हैं, तो एक ग्रुप के ही स्टूडेंट्स हैं, उसे हम कहेंगे इंट्रा ग्रुप कंपटीशन. द सेकंड is inter-group competition. The competition that occurs between communities, groups, is called inter-group competition. Competition between two teams of different districts or provinces or the countries is the inter-group competition. इसकी बेहतरीन मिसाल PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसके अंदर डिफरेंट हमने सिटीज की टीम बनाई हुई है, तो उनके आपस में मैचेस होते हैं, कंपटीशन होता है. दिस इज कॉल्ड इंटर ग्रुप कंपटीशन. Conflict. Second process of social interaction and opposition is conflict. When people are competing for inadequate material and non-material products. कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सोसाइटी में मौजूद होती है, जिसको हम कहते हैं कि मटीरियल और नॉन मटीरियल. इनके लिए जब लोग कम्पीट करते हैं तो उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है. ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में बी पावर, स्टेटस एंड प्रॉपर्टी. इसके लिए लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है. जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर हम पंजाबी में कहें तो पंजाबी लैंग्वेज में हम कहते हैं जी जर, जमीन पे जन. ये तीन चीजें हैं जिनके में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है. इनकी वजह से ही तमाम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है. कॉन्फ्लिक्ट, फील्ड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट में बी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस. कॉन्फ्लिक्ट किसी भी फील्ड में हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है. Difference between competition and conflict. This is very important to understand the difference between competition and conflict. First point between competition and conflict is competition is the continuous process and it never ends. Competition का process continuous है और ये कभी खत्म नहीं होता. And conflict, it is not continuous process. At some stage it must come to an end. Conflict का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस नहीं है और ये कभी ना कभी खत्म हो जाता है. कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाती है, बहुत से फ्री कैड के दरमियान सुलह हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट खत्म, लेकिन कंपटीशन कंटिन्यूस रहता है. सेकंड पॉइंट, इट इज इम्पर्सनल. कंपटीशन इज ऑलवेज इम्पर्सनल बट कॉन्फ्लिक्ट इज पर्सनल. Third point, it is unconscious and the individuals and groups are not aware of it. In competition, groups are in the competing form, but it is always unconscious. They follow unconsciously, they compete unconsciously. But in conflict, it is conscious and the individual and groups are aware and know each other. In conflict, ये जो कॉन्फ्लिक्ट में है, हम कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस कॉन्शियसली करते हैं और हमें पता होता है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट किस ग्रुप के साथ है. ठीक है. बट इन कंपटीशन समटाइम्स यू डिड नॉट नो हु इज योर अपोजिट पार्टी, बट इन कॉन्फ्लिक्ट यू कॉन्शियसली नो एवरीथिंग अबाउट द अदर पार्टी. फोर्थ पॉइंट, इट encourages हार्ड वर्क. Competition encourages
hard work, but conflict discourages hard work. For law in conflict, ये कानून है कॉन्फ्लिक्ट का कि ये हार्ड वर्क को डिस्करेज करता है. Fifth point, it is based on non-violence. Competition is always non-violence, but conflict may be violent. Violent हो सकता है conflict. ठीक है. हाँ जी. Next process of social interaction is cooperation. No society can develop without cooperation. In Pakistani society, we find a few examples of cooperation. In the form of the rural cooperate with their neighbors in watering the crops, harvesting the crops. In urban areas, the people cooperate with each other in different ways. Such cooperation is found between the customer and shopkeeper, teachers and students, the owner and the laborers, the doctor and the patient. This is all about cooperation. Types of cooperation. Informal cooperation, जैसा हम किसी की हेल्प करते हैं, अपने पड़ोसी की कोई सामान अपने घर में लेके जा रहा है, हम उसकी हेल्प कर देते हैं, या कोई दरख्त लगा रहा है, कोई गार्डनिंग का काम कर रहा है, हम उसकी हेल्प कर देते हैं, किसी की खाना बनाने में हेल्प कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कॉपरेशन. फॉर्मल कॉपरेशन is characterized a deliberate contractual nature and prescribe the reciprocal rights and obligations of member. फॉर्मल कंपटीशन में, कॉपरेशन में एक दूसरे को हम डेलिबरेटली हेल्प करते हैं और उसके कुछ प्रेस्क्रिप्शंस होती है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की, और ये रेसिप्रोकल होता है कि एक आदमी करता है तो दूसरा भी उसकी हेल्प करता है. ये फॉर्मल कॉपरेशन की एग्जांपल की किसी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं अंडर द रूल्स, राइट्स, ऑब्लिगेशंस. नेक्स्ट, accommodation. Accommodation is also a social interaction process. The parents accommodate their children even at the cost of sacrificing their own desires. When someone accommodates to the other person, it is called accommodation. The example of parents and children. Parents always accommodate to their children even by sacrificing their own desires. Defines. Smith की definition है जी. Smith defines accommodation as social adjustment of man to both natural and man-made environment. स्मिथ कहता है कि जब आप man-made environment या natural environment में अपने आप को adjust करते हैं, social adjustment आपकी होती है. This is called accommodation. Next is assimilation. Ogburn and Nimkoff. It means two dissimilar individuals or groups which become similar by removing their cultural differences is called assimilation. जब दो ग्रुप्स या इंडिविजुअल अपने कल्चर को भूल के एक ही कल्चर में मिक्स हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड assimilation. जैसे लाहौर में अगर हम देखें तो पंजाबी भी है, पठान भी है, लेकिन वो दोनों एक ही कल्चर में रहते हैं जिसको हम लाहौरी कल्चर कहते हैं. ठीक है. तो दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस है, बलोच है, पठान है, सिंधी है, बलोची है, पश्तून है. तो लाहौर के अंदर जब वो आते हैं तो एक ही कल्चर में आ जाते हैं, या सिंध के लोग पंजाब में आते हैं या पंजाब के लोग सिंध में जाते हैं तो वो उसी कल्चर में मिक्स हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड assimilation. Next is acculturation. The first step towards assimilation is called acculturation. In other words, it is cultural modification. Example, permanent settlement of migrants people from India and Afghanistan in Pakistan. Acculturation basically assimilation की ही एक टाइप है. Acculturation कहते हैं कि जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं, मूव करते हैं, your first step towards assimilation is called acculturation. जब आप अपने कल्चर को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं. देखिए, मैंने एग्जांपल दी है कि लाहौर में पंजाबी की तादाद ज्यादा है, लेकिन जो सिंधी आए हैं या बलोची आए हैं या पश्तून आए हैं, तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या लिया कि लाहौर के कल्चर को अडॉप्ट करना है. कैसे? अपने कल्चरल डिफरेंसेस को भूल के. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप उनका होगा टुवर्ड्स assimilation is called acculturation. This is all about today's lecture. I hope you people understand very well, and please subscribe the channel and also press the bell icon for further detailed lectures of sociology. Thank you very much.